Hi, everybody. Welcome to Achievers Club. And today we have an ultimate achiever with us, Mr. Mehul Wig. Mehul is an expert in flavors and fragrance. He is a manufacturer in flavors and fragrance, and he has client base pan India. Now, imagine a manufacturer who manufactures these products and he has to supply to pan India with a big team. How difficult will be for him to manage his business? Today, we'll listen to him on how he's managing his business through Google Workspace and how this technology has changed his business forever. Welcome, Mehul. Hi, Keval. Good So, morning. Mehul, can you just tell me about yourself? What do you do? Where are you based out of? Just a brief introduction. Sure, Keval. My name is Mehul Vig. I'm based in Mumbai. My company's name is Elita International, and we are manufacturers of flavors and fragrances. On the other hand, we also have a perfume manufacturing company. Okay. So, right now you have client base in multiple cities in India. Yes, right now we are pan India, but based out of Mumbai is where the manufacturing happens. Sure. And how many employees you have? How many blue collar? How many white collar? So the core team would be, I'll be very honest, to be 15 is what I need to manage. Rest, we outsource also a few employees. But the core Okay. team that we need to delegate tasks to or they're accountable to me is 15 employees. Great. Can you just be a little louder? Okay. Sure. Yeah, great. So, Mehul, why don't you tell us when did you start your business and how was your experience when you started your business? And as a manufacturer, what difficulties you used to face in your business? So we are a family business, but we have been in this line for 50 years, but we were traders, we were not manufacturers. So in 2012 is when we really started venturing into manufacturing. And that's when we have like a lot of formulations to deal with. When you are talking about a product, each product is like a recipe. So Right. I started working on Excel and started managing all of those on Excel. So this was about 2012 onwards is when I started, and Okay. yeah, I was So looking for how many SKUs or how many formulations you had to manage? at least close to 200 to 300 formulations, Wow. SKUs we were managing. You must have a proper lab to test everything and Yes, so we product have our quality and everything. R&D facility where we do the manufacturing, testing, blending, everything ourselves. Great. So tell me, like, what were the challenges that you were facing? If I talk about top three challenges, what was your first biggest challenge, which because of which you're struggling to manage things properly? So biggest challenge was, I'll be honest, to be the recipes, the formulations. So the formulations cannot be given to anyone, and we need to keep them in house. And that's the reason I tried a few softwares, but I was not very comfortable with. Secondly, managing the stocks of these raw materials was a very big challenge. Uh, Right. because we were dealing close to 1,000 odd chemicals. So purchase of these chemicals, when to order them, when the stock is low. So there was no way to keep a track. We were just doing it physically and manually, which was very cumbersome. Right. And second challenge would be task delegation. Nobody So knew. I think let's firstly discuss the first challenge. So you said stock management was the challenge, and you had around 1,000 SKUs to manage it, right? Like जब आप कुछ order 1,000 करते थे, chemicals. Yeah. या जब आप कुछ ऑर्डर करते थे कितनी क्वांटिटी होती है, लाइक कोई रॉ मटेरियल कितने किलोग्राम या क्या क्या लीटर रहता है, कैसे रहता है वो, व्हाट्स द स्ट्रक्चर? We buy in kgs, and the raw material goes from 25 grams to even 2 tons, 3 tons, so 3,000 kgs. So when we are buying in that volume, sometimes just up समझे कि when you're going for the batch and manufacturing के time पे you realize कि यार ये raw material तो stock में ही नहीं है, so that whole batch gets affected. So राइट that's a very big challenge. राइट सो एक तो व्हाइल यू वर मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट्स, दिस यूज्ड टू बी चैलेंज दैट कोई एक प्रोडक्ट नहीं है तो उसको रीऑर्डर करना है.
बट इसमें आपका कितना इन्वॉल्वमेंट रहता था इन टर्म्स ऑफ योर टाइम एंड योर मेंटल ब्लॉकेज ऑन जस्ट पुटिंग द एफर्ट एंड थिंकिंग कि ये प्रोडक्ट है नहीं है, लाइक व्हाट वाज दैट सिनेरियो, हाउ वाज इट? सो बहुत एफर्ट जाता था, फिजिकल इन्वेंट्रीज बार बार चेक करते थे रेपिटेटिवली, देन कितनी बार मिस्टेक्स हो जाती थी, मटेरियल इज ऑलरेडी इन स्टॉक और हम लोग रीऑर्डर कर देते थे. सो लॉट ऑफ, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू मैनेज सो मेनी थिंग्स फिजिकली. तो वही डायरी लेके जाओ, जर्नल लेके जाओ, रोज चेक करो, एंड सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट. So if I want you to put up a number that how much time specifically for this activity, stock management, आपका per day का at least कितना time जाता था? सो एटलीस्ट वंस अ वीक तो फुल डे यही काम होता था. अच्छा. कि पूरा दिन सिर्फ स्टॉक चेकिंग में चले गया. Right. कभी कभी अगर समझो वो वीकली नहीं हुआ तो दो दो तीन तीन दिन भी इसमें निकल जाते थे. Wow. जस्ट सब कुछ रोक दो, पहले स्टॉक चेक करो. So मतलब as a business owner, you need to focus on your sales, you need to focus on team building, you need to focus on client delivery. But ये एक ऐसी चीज है जो like without any reason it was consuming most of your time, right? True. A lot of time. And while you used to check कैसा एनवायरनमेंट रहता था, you're asking your team कि ये प्रोडक्ट है नहीं है, तो obviously थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती होगी. गर्मा गर्मी, आई एम डिपेंडेंट टोटली ऑन देम. वो जो बोल रहे हैं तो उसमें मिस्टेक भी हो जाती थी. राइट. यहाँ नहीं पड़ा था, वहां देखा नहीं, एंड ऑल दैट. उस वजह से कभी पता ही नहीं चलता था कि क्या ऑर्डर हो रहा है और क्या जेन्युइनली वी हैव दैट इन स्टॉक और इट्स नील स्टॉक. तो वो इशू डेफिनेटली होता था. एंड रेसिपीज को जो फॉर्मुलेशंस को जो हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर्स है, I can't outsource that because it's like giving out my whole formulation to someone. That's the secret sauce that you do not want. Exactly. So managing up is now completely in house. So at least I know, bhale wo it might not be like the best of the best, but at least it is at par with the best. So can you show us like how are you now managing your stock on Google Workspace? Sure, I'll just share my screen. So this was the first thing I implemented when I started learning about Google Forms, because Google Forms is the main game changer here. क्योंकि data input करना and sheets के साथ में जो उसका collaboration है, that works like wonders. So ये hide. So now through a Google form, whenever there is a stock low in the office, right, in the lab, so there is a need to order form, which is given on the employees intranet also on their phone, especially for the lab team. And all they have to mention is the code, the raw material type that they are ordering, uska name of the product, if there is any code other than that, and then kitna quantity we have to buy, and what is the current stock that we have, and who is the person who's ordering it. And when they submit, I get this sheet mein data, which is color coded as per ki what are the stages of this. So jaise green is matlab it was ordered and it's already received. Red is that this material is not in stock with the current supplier. So I can see from here only, and then usko bhi maine segregate karke company wise कर दिया है. तो I know कि अगर मुझे किसी कंपनी से बात करनी है तो I can just open their sheet and see कि मेरे को उनसे कौन से raw material की requirements है. Right. Directly filter and talk to them about only their products and उनका current stage क्या है. Awesome. So right now, not only the item or stock management, your vendor management also has become easy now. Yes. So it has become very easy for following up कि भाई आपको मैंने order दिया था for this chemical, उसका क्या status है. So I just need to open these sheets and I can just see कि इनको क्या order दिया है और इनका क्या status है. पहले like WhatsApp से हो जाता था, बट WhatsApp में भी काफी मैसेजेस है, तो वी डोंट रियली नो एक ही जगह पे कि वो कहाँ हो रहा है और उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है उस पे. यहाँ तो आपको ट्रैकिंग का डेटाबेस है, यू हैव अ कंप्लीट हिस्ट्री एंड यू नो ऑन व्हाट्स कमिंग एंड व्हाट्स गोइंग. ट्रू, वेरी ट्रू.
Very true. That's really great. So here now you're able to manage your entire stock as well easily, Very true. Very true, Keval. right? This And was the first thing that I implemented with help of Google Forms, and which has really changed the way we are working with now. So it is as good as live data now that we get instead of spending hours on the inventory. can you click on the dashboard sheet and like show us on what all sheets or automation have you done, and then we'll go to the next problems. Okay, we have automation in management, admin, accounts, operation, marketing, sales, lab, obviously. Great. So all departments right now you have in one dashboard, and you can go to any of the sheet or any of the form just from one place, right? So Abhi, jaisa I want to see which are the orders in pipeline. How you go to a McDonald's and you see कि भाई current orders कौन से हैं जो pending. So I just click on this sheet, and this is showing me all the items which जिसके orders pending है अभी हमारे. Absolutely awesome. Great, great. No, really kudos. I'm really proud of you that you have implemented things in a very organized way, and really happy to see the results. Thank So you. I want to. Can you just stop sharing the screen now? Sure. I want to now go to the second problem of your business. First was obviously stock management. So you said आपके on an average 1 से 2 दिन आपके weekly चले जाते थे, and one day for a business owner is it's too precious. Like अगर आप cost देखो अपने टाइम time, तो जाता था, but वो डेटा भी करेक्ट नहीं था ना. It was not accurate. right? So leaving aside कि वो 1-2 दिन गए, उसके बावजूद the work was not up to the mark and the data was not correct. And you always had this back of your mind कि यार कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, right? And कभी भी sure नहीं है कि वो चीज सही है या गलत है. Very true, Keval. एंड आई ऑलवेज फील कि मेहुल कि जब ऐसा कुछ एनवायरनमेंट होता है, जब चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं है, यू डू नॉट थिंक ऑफ स्केलिंग द बिजनेस, यू थिंक ऑफ जस्ट कि जितना है उसको मैनेज कर लो, इतना ही बहुत है. Exactly. राइट. सो अभी कितना टाइम जाता, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड नाउ टू मैनेज योर स्टॉक? तो उसमें क्या किया है कि जैसे बीजीएम में आपने बताया कि allocate certain hours in a week. So वो need to order के hours हमने allocate कर दिए मंडे एंड फ्राइडे को. तो मंडे एंड फ्राइडे आई जस्ट सिट एंड गो थ्रू द लिस्ट कि किस किस को ऑर्डर लगाना है, या फ्राइडे को किस किस का ऑर्डर अभी तक आया नहीं. सो ऑटोमेटिकली लाइक माय टाइम इज सेव्ड वेरी सिस्टमेटिकली. वो ऑर्डर भी हो रहा है एंड ऑर्डर्स आर नॉट मिस्ड आउट, क्योंकि पहले व्हाट्सएप से ही सिर्फ ट्रैकिंग होता था एंड फिर भूल भी जाते थे, ऑर्डर लगा के भी भूल जाते थे. अच्छा. हाँ, तो यहाँ पर कम से कम दिख रहा है कि इस पर्सन को ऑर्डर किया है इस डेट को और अभी तक नहीं मिला है, तो आई कैन अगेन फॉलो अप. So definitely it has changed a lot of systems in the office itself, in the lab itself. उनको खुद को भी दिख रहा है ये. Right. Now let me just take you to the next challenge. Like, what was the second biggest challenge for you as a manufacturer, and as a person who is handling so many departments and big team, and having your lab and your production, and handling the clients and getting the new orders? What was the second biggest challenge? Second very big challenge was task delegation. Okay. Team management, you're team saying. management. Yeah, because कहने के लिए 15 employees है, but it was always top down approach कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तो काम होगा, अदरवाइज दे विल नॉट नो ओनली कि उनको क्या करना है पूरा दिन. अगर जो ऊपर से ऑर्डर दे रहा है अगर वही 2 दिन या 4 दिन के लिए बाहर है फिर तो दे आर जस्ट सिटिंग देयर, ऐसा ही हो जाता था. Right. वो उस वजह से जो KRAs पहले बनाने में टाइम गया, बट वो KRAs इम्प्लीमेंट करके उनको दिए एंड देन दे कुड रियली फिनिश देयर KRAs. एंड ऑल्सो आई कुड सी कि कौन काम कर रहा है, एंड विद द व्हाट्सएप ऑटोमेशन दैट यू हैव गिवन, दैट हैज रियली चेंज्ड एवरीथिंग. बिकॉज ईमेल पे भी हमने ट्राई किया था, बट ऑल द स्टाफ इज नॉट ऑन ईमेल. सिर्फ आई कैन काउंट लाइक द टॉप 5 पीपल वुड बी ऑन द ईमेल्स. नीचे ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं अभी, इवन टिल माय शॉफर जो ड्राइवर है, उनको भी मुझे कोई टास्क देना होता है ना, आई डोंट कॉल हिम, आई गिव इट टू द टास्क डेलीगेशन ओनली, बिकॉज आई नो कि मैं बोलूंगा एंड वो कोई ना कोई काम में सब बिजी होते हैं, कोई भूल जाएगा. एंड इससे अच्छा भी वो राइटिंग में जाता है और एवरीडे मॉर्निंग में रिमाइंडर भी आ जाता है. Right. So the things get done automatically. Even if I have to order a single thing
from the market and I have to send someone, I'll give it through the task delegation only. So and bigger tasks तो है ही accounts के, and उसमें क्या है, what this has done is it has given us so much knowledge of how and what we can achieve, right? So I've even made a Google Calendar, जो calendar office का है, तो उसमें all the reminders we have set in, and with help of Pabbly, those reminders come to the office team, the accounts team. तो जैसे GST का है या whatever important dates है, कोई policies के dates हैं, so automatically WhatsApp reminders भी आ जाते हैं उसके. So right. Yeah, quite a lot of things we have implemented in this. बट अभी तो इम्प्लीमेंट हो गया और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं. बट जब ये नहीं थी ये चीज, जब आप कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे थे, व्हेन यू वर नॉट यूजिंग द टास्क डेलीगेशन सिस्टम व्हिच यू गॉट इन द एमबीए प्रोग्राम, उससे पहले क्या सिचुएशन थी? हाउ यू यूज्ड टू मैनेज योर टीम? क्या आपका डेली का रूटीन कैसा रहता था? No, there was no clear management as such. वो उसमें स्ट्रगल ही होता था. हमारा ही और टेम्परेचर हाई हो रहा होता था कि दिस टास्क इज नॉट डन, ये किसको बोला है, वो किसको बोला है. तो बिकॉज ऑफ दैट मिसमैनेजमेंट भी बहुत हो जाता था, एंड दे वर नॉट अकाउंटेबल. किसको ये नहीं पता होता था कि ये मुझे करना है या किसी और को करना है. तो अभी नाउ दे नो कि जैसे अभी 1% लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने उनके लूम पे वीडियोस बना लिए थे. Awesome. Yeah, so then now this is what we are doing कि जो भी in-house जो आएगा तो he already knows कि उसके KRAs क्या है, because already वो KRA tool में तो है ही है, task delegation tool में. So that person knows कि when I'm coming in तो मेरे ये task है, and वो loom videos देखने के बाद में उनको ये भी समझ में आ गया कि training हो गई without me getting involved also. तो that has been definitely a game changer. So अब जैसे अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, इन्फोसिस जैसी कंपनी, नाउ इन्फोसिस was not Infosys on the day one. They just started from a small room and right now they are in multi-billion dollars. But if somebody joins the company, they have a clear-cut 6 months of training of that particular employee. But SMEs में क्या होता है कि आज हायर किया और 2 दिन तक थोड़ा बहुत समझाया, and then we expect that person to perform like a rock star. और अगर कुछ वो मिस्टेक कर देता है तो हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि यार कहीं कुछ गलत हायरिंग तो नहीं कर ली, या फिर द प्रीवियस वन वाज गुड एंड दिस वन इज गाय इज नॉट दैट गुड, एंड देन वी लूज अवर पेशेंस. एंड देन जब अंदर से एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती है तो दैट एम्प्लॉयर आल्सो सेंसेस दैट समथिंग इज रॉन्ग. बट अब आई थिंक जो आप वीडियोस बना रहे हो, यू आर रिकॉर्डिंग देयर केआरएस, तो आप कैसा स्ट्रक्चर, अब एम्प्लॉयज कैसा फील करते हैं? They are feeling that it's more organized. एक they are seeing the change themselves, and उनको भी लग रहा है कि ये अभी जैसे कुछ एम्प्लॉयज थे जो परफॉर्मेंस में वीक भी थे, and maybe they were not weak by their capability, it was weak because हमारे orders clear नहीं थे, and उनका performance has been very surprisingly good now. मतलब उनके टाइम टू टाइम मुझे आ जाता है टास्क कंप्लीशन का, टाइम टू टाइम उनके रिमाइंडर्स आते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. तो आई एम वेरी अमेज्ड कि एटलीस्ट नाउ आई नो कि द एम्प्लॉय की मिस्टेक नहीं थी, इट वाज आवर मिस्टेक व्हिच वाज द रियल मिस्टेक. द सिस्टम वाज नॉट देयर. सो I say to everybody that a business without system is like a circus. जहाँ पे जो ओनर है वो डंडा मार के खड़ा है, सबको डंडा मार रहा है और सबको सुना रहा है. But when you have systems, then people outperform even the business owner itself, right? That's where the true capability and true organizational structure comes into the picture. Because alone आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी टीम ही है जो actually चीजों को करती है, right? And if you're just don't have any systems and just guiding them and just every day reminding them, तो employee भी कहीं ना कहीं irritate हो जाता है कि daily basis पे हमें ये चीज सुननी पड़ती है. But now they might be feeling that they are working in a professional company which has a proper clear structure and systems. Very true. So can you show us like how are you managing your team now? पहले तो call पे manage करते थे. Now what system are you using? Now तो this is a task delegation. So this report also comes by email to me, and there are different employees. तो person wise, employee wise उसकी reports आ जाती है. So अब आप Google form fill करके उनको task सबमिट कर देते हो और यहाँ पे आपको क्लियर कट रिपोर्ट आ रही है कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया और किस एम्प्लॉय का काम अभी पेंडिंग है, और वो पेंडिंग है तो क्यों है, तो
कुछ चीजों के अभी उन्होंने जैसे चेंज ऑफ एम्प्लॉय हुआ होगा या कुछ, तो उसकी वजह से अपडेटेड नहीं है, बट या मोस्ट ऑफ द टास्क दे आर डूइंग ऑन टाइम एंड आई कैन सी देयर परफॉर्मेंस, देन आई कैन से कि भाई इतने रिविजन्स क्यों ले रहे हो. I can see 70-68% of work is completed. Yes, And this is also completed but delayed, right. pending. So Now this only but delayed. what percentage is pending? Just I think 2 to 3% is pending. Yeah. 70% of the tasks are pending. So awesome, awesome. So what has changed after this? Like now you're delegating the work, you're getting all the reports in progress, completing the work. अब आपका टाइम कितना जाता है टीम मैनेजमेंट और पहले कितना जाता था, कितना डिफरेंस है? पहले तो एवरी सिंगल टास्क वी वर गिविंग देम कि ये करना है, इस टाइप का ऑर्डर करो, ये करो, बैंक का काम करो. नाउ एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड लिटरली, सो वी डोंट हैव टू थिंक कि भाई कब क्या करना है, दे ओनली नो. तो Right. वो बहुत बड़ा फर्क हो गया है. So in terms of time, like how much time you used to spend on just managing your team, giving the work to them, और अभी क्या स्ट्रक्चर है? बेसिकली अभी तो टाइम नहीं लगता है. पहले इट वाज अ लॉट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द डे इसी में चले जाता था बताने में कि किसको क्या करना है. बट नाउ तो आई थिंक एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड लाइव, तो वी डोंट हैव टू रियली सिट एंड सी कि भाई कौन क्या करने वाला है. तो इट हैज बीन वेरी डिफरेंट नाउ. नाउ इट इज क्वाइट लाइव, आई वुड से. Okay, दिन के एटलीस्ट 4-5 घंटे तो इसी में जाते थे. अब वो 4-5 घंटे आपके नहीं जा रहे? नहीं, डेफिनेटली नहीं. Right. Great, great. So, I see your CRM report here. So now you're getting all the reports. I am pulling this is because CRM was not being managed. We did not know how many customers we can target, whom we can target India में. तो अभी now with we can see all of this कि how many customers are there totally. So we have about 100 and we don't have these many customers. These are potential customers. So this is basically about 200 odd companies we have already targeted post implementation of this Awesome. software. जो पहले मेरे ख्याल से 15-20 जन से ज्यादा हम नहीं कर पाते थे. But now we are targeting at least 200 companies. So 10 times growth दिख रही है आपको in terms of your business after implementing systems. Yes. Awesome. So I would CRM का भी जो हुआ है, this was a very important part because CRM के साथ में this is an outside this thing जो मैंने learning में सीख लिया and then I implemented, but that learning is very important कि ये implement कैसे करना है. was a Trello board जो साथ में अब क्या हो रहा है, पहले हर एक sampling में I had to be involved. अभी वो सारी सैम्पलिंग ऑटोमेटेड होती है. तो दिस इज हाउ वी सी द बोर्ड एंड देयर इज अ लैब टीम. आई डोंट इवन हैव टू चेक कि कौन सा सैंपल किस कस्टमर का है. गूगल फॉर्म भरते हैं सेल्स टीम वाले कि वी नीड दीज सैंपल्स एंड ये सीधा लैब टीम को दिखता है बोर्ड एंड दे चेंज द स्टेजेस ऑफ दिस and they mark it till completed, dispatched basically. So that is why we could reach with the CRM and with this Trello board close to 200 customers. Otherwise, there was no way to reach so many customers. And now you're reached to 200, and before this system, you were not able to manage even 10-15 clients, isn't it? Yeah, 15-20 on the higher side. मतलब फिर कंफ्यूजन चालू हो जाता था, उनके लेटर्स देखो ये वो है ना. जो जैसे दुनिया कहती है कि 10x कहने की बात होती है, बट बिजनेस में 10x मैनेज करना और ग्रो करना पॉसिबल नहीं है. बट यू हैव शोन दैट growing your business 10 times is possible when you have the right mindset, when you're open to learning, and when you implement systems. So I see when you used to come in the live Q&A sessions as well in the MBA program, you used to have some great queries as well. And I always do think that दो टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास. एक जो प्रोग्राम में रजिस्टर कर लेते हैं और भूल जाते हैं. सेकंड, जो रजिस्टर करने के बाद एक्चुअली ट्रेनिंग करते हैं, टूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं और ट्रेमेंडस रिजल्ट्स लेके आते हैं. एंड उन सब स्टूडेंट्स के लिए अचीवर्स क्लब बनाया है, where we show real success stories of students who have taken their business to the next level, not by force but by using the smart technology. So Mehul, you have shared us 2-3 things. What was the last biggest challenge and biggest takeaway you had from the program? So biggest takeaway was intranet.
which was ऐसा तो सोचा नहीं था. just tell us कि प्रॉब्लम क्या थी और आप क्या सॉल्यूशन आ रहा है? Yeah, so it was totally unorganized way of handling. पता ही नहीं था कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सा डेटा किधर है. या फाइल्स फिजिकली भी न्यू कि ये कबर्ड में ये फाइल्स हैं ऑल. राइट जैसे उस दिन बात हो रही थी कि एनी डेटा दैट यू शुड बी एबल टू एक्सेस शुड बी विद इन 30 seconds. ये शायद आपने ही बताया था कि दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर बिजनेस, कि कोई भी डेटा हो 30 seconds में उसका आंसर मिल जाना चाहिए. तो राइट वो पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ इंट्रानेट. तो और इंट्रानेट क्या था, पहले आई डिड नॉट इम्प्लीमेंट, बट जब मैंने देखा तो मैंने क्या किया. फर्स्ट थिंग आई वेंट वाज स्टार्टेड इंटरनेट, एंड आई वुड रेकमेंड दैट whoever is doing it, first thing you just make an intranet. भले आपके एक दो फॉर्म हो, चार फॉर्म हो, दो शीट्स हो, just put whatever you have created on that. बाद में उसको ऑर्गेनाइज करते रहो तो यू विल सी अ बिग डिफरेंस. बिकॉज वो फॉर्म्स भी वरना अलग अलग जगह पे बनते जाते हैं, एंड देन यू गेट कंफ्यूज कि बनाया क्या था. एटलीस्ट नाउ एज अ डिसिप्लिन वॉट एवर आई क्रिएट, द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई पुट इट ऑन द इंटरनेट, सो आई एटलीस्ट आई नो कि वो कहाँ पर है. So can you show us on how does your company's Alita International internet looks like? And here you're saying कि internet पे पूरी आपकी company manage हो रही है, everything. Total. So right from attendance to payment reminders, couriers जो है, incoming materials है, outgoing materials है, any important phone numbers है, organizational structure है. So all of this you can see through the internet. So जो भी incoming material है, incoming किसी के samples आ रहे हैं, या incoming कोई documents है, या incoming payments है, so all of this is being handled through intranet only. Great, great. Office की keys किसके पास है, so all of that is also here. This is the office calendar, so it's showing that there is some invoice to be sent today. So these reminders will come on WhatsApp then. Awesome. And you have this internet for all your departments. Can you show us? Department wise, so if I see, say, the accounts, so if I have to send payment reminders, so I have to just click here, and वो जो tool है payment reminder का वो खुल जाता है. If this is further I created using Pabbly, which is bank statement request. Now every time ये employees आते थे कि bank statement चाहिए, मैंने भी उसको automation कर दिया है. They just have to put the email address of the RM, उस RM का नाम, and कौन से account के लिए उनको statement चाहिए, and the email goes through my account directly, my email address. Okay. So that way मुझे बैठ के वही का वही same email request का भेजना नहीं पड़ता है. So small things में we have implemented. These are the outstanding payments, किसके Awesome. overdue हैं payments. All of this you can see on this part. Right. And marketing नहीं, HR admin में है ये. So you have implemented in sales, production, marketing, lab, everything. लेबल्स प्रिंट करने हैं तो पहले वो बैठ के डिजाइन उसका फिट करते थे. नाउ स्टैंडर्डाइज लेबल्स कर दिया है पूरा. मुझे ना I just want keep आपके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए. थैंक यू. आपने एक्चुअली सीखी ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं and you have actually got the big results from the MBA program. Kudos. And the family documents, so when I click here, so the whole documents are here, including cancelled check, whatever we need basically. Right. So business reports में तो all the same reports which I showed you. Trainings में अभी I'm putting in all those videos. So जैसे as an example, there was a request from one of the sales team कि उनको fragrance की knowledge थी, flavor की नहीं थी. So he asked me कि you train me. तो मैं बोला I'll not train you and you wait. तो मैं वो weekend पे बैठा और मैंने Loom पे जाके सारे videos बना दिए, तो उसको लिंक करके एलिट्रा ट्रेनिंग सेंटर पे डाल के उनको दे दिया. क्या बात है. मैं उनको ट्रेन करता, then again I would have wasted that time. Now the videos को edit करके I saw कि it was only a 30-minute training. Now he has to train himself repeatedly भी करना है, he can do it. Or any new person is coming, he has to just. Yes.
So I आपका किसी चीज में टाइम जाए, यही कॉन्सेप्ट ऑटोमेशन का, कि वो टाइम एक बार जाए और उससे रिजल्ट्स आपको लाइफ टाइम आते रहे, राइट? एंड यू डू नॉट सॉल्व द डेली प्रॉब्लम्स, यू सॉल्व अ रूट प्रॉब्लम, और उसमें जो डेली आपके प्रॉब्लम्स है वो वहां से फिनिश हो जाए, एंड ट्रूली यू हैव रियली अचीव दैट लेवल इन योर बिजनेस. So Thank I really want to congratulate you that you have implemented automation in the right way, and I'm sure in the future as well you have a long path to go. And automation अभी जर्नी शुरू हुई है, तो अब आप जब सोचते होगे तो हमेशा माइंड आपका ऑटोमेशन की तरफ ही चलता हो. yeah, everything, मतलब right from abhi medical files, right? So now I go to a doctor for any prescription, so I'm clicking a Google form, uska bhi bana diya, so I don't have to keep records. So automation is now working in any and every part of my life. Automation is the key to life. Yeah, we need to be more organized, then only we'll be able to see where we are. Right. Otherwise we will never know कि हम really कहाँ खड़े हैं and where can we go to scale up. So True. Because if you can control things, then you can scale things, and control cannot happen if there's no system, because you think that you're dependent on your team and your team thinks that they're dependent on you, and instead of focusing on customer, खुद ही firefighting होती रहती है. So you have literally put up good water in that fire, and you have literally taken things to the next level. So what next, Mehul? Like, where do you see your company in next couple of years, maybe till 2025? Where do you see with this automation, कहाँ पे आप अपने business को लेके जा सकते? so जैसे we were earlier only restricted to catering to 20 odd companies, उससे ज़्यादा हमने किया है sampling and all, but proper way में उसका कोई tracking ही नहीं था. What are the stages, कौन से sampling stage पे हैं क्या, तो जब याद आया तब कॉल करते थे, राइट? अब CRM के वजह से वी आर सीइंग कि एटलीस्ट 200 कस्टमर्स का डेटा हमारे सामने है. आई कैन जस्ट पुल अप द डेटा which then can lead to potential customers. So definitely I see कि we should be able to 10x our growth very soon. Step by step we'll go, we'll first double it, triple it. Automatically we are seeing also results of this, जो reminders है customers को भेजने and all, so we can now see because of all the CRM tool. So now efforts are less, but the results are more. As you said, we are spending more time on growth related activities, not managerial activities. So True. that itself should give us the growth now. Yeah, obviously. That, because growth is, sales is byproduct. If you do not invest time in it, then it is not growth. Some smart person has said that what you appreciate appreciates, right? So you're now focusing on growth, and obviously growth will come. And a lot of people, they think that they want to grow, but they don't spend even a minute on actually doing those activities which result into the growth of the company. इसमें ना केवल one thing was there when I started doing all of this. Literally for the first 2 months I felt कि I was wasting my time. मुझे customers को call करके अपना time वहाँ डालना चाहिए, ये सब में मैं time waste कर रहा हूँ literally. But now when I see, go back and see कि मैंने क्या क्या develop करके organize कर दिया है, so it is saving me that time only, and that I can implement on other things. Otherwise that always एक mental chatter चालू ही है कि यार ये सब करने की क्या जरूरत है, you're wasting your time, इससे अच्छा दूसरा काम कर, customer को call कर. Right. So ये बहुत सारे business owners हैं जो जब वो webinar join करते हैं, they want to join us in the program. So a lot of people say कि we are too busy, we don't have time to learn. But that is the reason they need to learn, because they are busy, and the busyness is not, it's not, they're not busy, they're inefficient, right? And जब technology आएगी, automation आएगी, तो जो busyness है, they'll be free and they'll have more time, just like you, when growing the business. Because busyness की तो कोई definition नहीं है. You see big people like Steve Jobs, Mark Zuckerberg, right? Elon Musk, Narendra Modi, उनके कितने बड़े टारगेट्स हैं, वो कितनी बड़ी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, एंड देन स्टिल दे हैव टाइम फॉर देयर हेल्थ, देयर फैमिली. बट यहाँ पे बिजनेस ओनर्स के 10 एम्प्लॉयज होते हैं, दे थिंक दैट दे आर द बिजीएस्ट पीपल ऑन अर्थ. सो दैट्स व्हाट आई टेल एवरीबॉडी, दैट एसएमई पीपल आर दैट ब्रीड हु आर द बिजीएस्ट पीपल ऑन अर्थ. बट दे थिंक दे आर बिजी, दे आर नॉट बिजी, दे आर इनएफिशिएंट पीपल. True. Right, great. So, Mehul, it was pleasure having you in the Achiever Club, and congratulations that you are part of the Achiever Club now. You have achieved a lot through automation, and yes, there's much more that you will be achieving, but you have now absolutely on the right path.
and we will be there for lifetime handholding support as well, to help you, to guide you, so that you can, remove the obstacles and you can keep growing your business. So what is the message to all the manufacturers, all the traders, every business owner who is listening to you right now? Yeah. First thing is, if you're in manufacturing or trading also, be it whatever business, you need to be organized. If you can't see what all is there on the table, you'll never know where you are. The current, you'll not know your current position only. So, and it has to be system dependent and not people dependent. That is the future. Otherwise, you'll never be able to scale. फिर वो एक ही shop पे या एक ही office में बैठे रहेंगे. We cannot scale to multiple shops or multiple offices. Great. That Thank you doesn't so happen much. with systems. So this was Mehul Wick, the manufacturer of flavors and fragrance, owner of Alita International, ready to take his business to the next level. And thank you so much, Mehul, for inspiring everybody, for showing and on that, yes, implementation and automation is possible when you invest time and when you get the right mentorship and right handholding support as well. Thank you so much. Keep learning and Thank you very much, Keval. Thank you. Thank you.